गुड मॉर्निंग दिरा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आकाश तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। मिले या ना मिले ये तो तकदीर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। The antibiotic penicillin can kill invading bacteria without harming human cells because it targets bacterial cell wall, plasma membrane, ribosome, chromosome. First, understood the question. How can a penicillin kill bacteria but not kill us? Imagine a police officer trying to catch only thieves in a crowd. The officer must find something that thieves have but ordinary people don't. Similarly, penicillin attacks something bacteria have that human cells don't. Penicillin specifically targets the bacterial cell wall, a rigid outer structure made of a molecule called peptidoglycan. Human cells do not have cell walls, only cell membrane, which allow penicillin to destroy the bacteria without harming human cells. That means bacteria have cell walls. Human cells do not have cell walls. Therefore, penicillin can selectively attack bacteria while leaving human cells largely unharmed. A cell wall is a strong protective layer outside the cell membrane. Plasma membrane. Plasma membrane is also known as cell membrane. The plasma membrane is the thin outer covering of every cell. Human cells have cell membrane. Bacterial cells have cell membrane. If penicillin attack plasma membranes, it would damage human cells too. Ribosome. Make proteins. Both bacteria and humans have ribosome. Chromosome. Chromosome contain genetic information. That means DNA. Both bacteria and humans have genetic material.
Penicillin does not primarily target chromosome. Its main target is cell wall synthesis. The cell wall protects the bacterium from bursting. Penicillin destroys these protections. So answer is cell wall. Because bacteria have cell walls and human cells do not have cell walls. Therefore, penicillin can selectively attack bacteria while leaving human cells largely unharmed. This is called selective toxicity. That means harm the microbe, not the patient. The pair of trousers you bought for me do not fit me. That means the trousers you bought for me are not my size. मतलब जो trousers तुमने मेरे लिए खरीदी थी वो मुझे फिट नहीं आती. Trousers सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट पेयर है. The pair. The real subject usually comes before of. तो ऑफ के पहले पेयर है तो पेयर ही हमारा सब्जेक्ट है ना कि ये हमारा सब्जेक्ट ये है. What is the sentence really talking about? Here the sentence talking about one pair, not many trousers. Trousers is only extra information. So the pair is singular. Let's check grammatical rule. The pair of trousers you bought for me do not fit me. Do not नहीं होगा, does not होगा क्योंकि pair यहाँ पे singular है. तो हमारा correct sentence होगा the pair of trousers you bought for me does not fit me. Paridhi knew she still had to buy the groceries, pick up dry cleaning, and prepare the presentation for the next day's meeting. That means Paridhi knew she still had 3 tasks: buy groceries, pick up dry cleaning, and prepare a presentation. That means परिधि जानती थी कि उसे अभी भी 3 काम करने हैं: किराने का सामान खरीदना, ड्राई क्लीनिंग लेना, प्रेजेंटेशन तैयार करना. The question is about parallel structure. That means follow the same grammatical structure and forms like to buy the groceries, pick up dry cleaning, and prepare the presentation for the next day's meeting. Here all are verb plus article plus object. That means to buy the grocery, verb plus article the and object groceries. And here verb prepare, article the and object presentation. But here verb pick up plus object dry cleaning. Here the article is missing. So यहाँ पे शब्द dry cleaning होगा. Correct. Sentence is Paridhi knew she still had to buy the groceries, pick up the dry cleaning, and prepare the presentation for the next day's meeting. Cursor and cursory. Cursor means a movable pointer on a computer screen, and cursory means done quickly without much attention. Cursor and cursory दोनों में मेन डिफरेंस यह है कि cursor एक नाउन है जो स्क्रीन पर दिखने वाले पॉइंटर को इंडिकेट करती है. दैट मीन्स कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले वो मूवेबल पॉइंटर या टूल जो यह दिखाता है कि आप इस समय कहाँ क्लिक या टाइप कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मूव द कर्सर टू द टॉप राइट कॉर्नर टू क्लोज द विंडो. जबकि कर्सरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब किसी काम को बहुत जल्दबाजी या बिना गहराई से देखे या बिना ध्यान दिए केवल ऊपर ऊपर से देखना. दैट मीन्स सुपरफिशियल या हेस्टी. कर्सरी के साथ अक्सर ग्लैंस, लुक और एग्जामिनेशन जैसे शब्द का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द टीचर गेव द नोटबुक ओनली अ कर्सरी ग्लैंस. एंड सेकंड एग्जाम्पल ही गेव द न्यूज़पेपर अ कर्सरी ग्लैंस बिफोर लिविंग. दैट मीन्स उसने जाने से पहले अखबार पर एक सरसरी नजर आ गई. सो लेट्स चेक द ऑप्शन. कर्सर मीन्स अ हैंडराइटिंग टाइप. नहीं, गलत. कर्सर मीन्स वेरी ऑफेंसिव. नो, गलत है. कर्सर मीन्स वेरी ओल्ड नॉर्म्स. नो, ये भी गलत. कर्सर मीन्स अ पॉइंटर. यस. एंड कर्सरी मीन्स समथिंग डन इन हैस्ट. हैस्ट मीन्स क्विकली. कर्सर मीन्स अ पॉइंटर एंड कर्सरी मीन्स समथिंग डन इन हैस्ट. यस, ये ऑप्शन सही है. क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक. Climatic means related to climate and climatic means related to climax. That means the most intense or exciting part of a story or a event. Let's check the option. Climatic means related to climate. हाँ सही है लेकिन आगे देखते हैं. And climactic means the most exciting part of a story or situation. Yes, ये भी सही. That means option ये हमारा आंसर. Affect and effect. Mainly affect is a verb and effect is a noun. Trick to remember that. Raven. R means remember. A means affect is a. B means verb. E means effect is a. N means noun. Raven. That means remember. Affect is a verb. Effect is a noun. Affect means action. Affect means action. That means verb. And effect means end result. That means noun. Affect means to influence or produce a change in something. Example: the loud music will affect your hearing. Missing sleep badly affects my mood. Effect is the actual result or outcome of a change. Example: the law went into effect today. Example: the special effects in the movie were amazing. But here are also rare exceptions. That means जब अफेक्ट एक नाउन बन जाता है, अफेक्ट verb नहीं एक नाउन बन जाता है. इन साइकोलॉजी अफेक्ट का मतलब होता है किसी के चेहरे के हाव भाव, भावनाएं या इमोशनल रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल: द पेशेंट शोड अ फ्लैट अफेक्ट. दैट मीन्स मरीज के चेहरे पर कोई हाव भाव या भावनाएं नहीं दिख रही थी. एंड इफेक्ट जब नाउन की जगह verb बन जाता है, जब आप किसी बदलाव को खुद लागू करते हैं या किसी चीज़ को सच कर दिखाते हैं. दैट मीन्स टू ब्रिंग आउट चेंज. तब इफेक्ट एक verb की तरह काम करता है. यह अक्सर चेंज शब्द के साथ जुड़ कर आता है. फॉर एग्जाम्पल: द न्यू डायरेक्टर होप्स टू इफेक्ट मेजर चेंजेस इन द कंपनी. दैट मीन्स नए डायरेक्टर को उम्मीद है कि वे कंपनी में बड़े बदलाव लागू कर पाएंगे. लेट्स लर्न फ्रॉम सम एग्जांपल्स. रनिंग एवरी डे हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ. दैट मीन्स रोज दौड़ने का उसकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ा. डोंट लेट हिज नेगेटिव कमेंट्स अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस. दैट मीन्स उसकी नकारात्मक बातों को अपने आत्मविश्वास पर असर मत डालने दो. द कॉफी इज स्टार्टिंग टू लूज इट्स इफेक्ट. दैट मीन्स कॉफी का असर अब खत्म होने लगा है.
So now check the options. Affect means the origin of something, and effect means the consequence of an action. No, affect means to influence, and effect means the result of an action. Yes. So हमारा आंसर होगा affect means to influence and effect means the result of an action. Attitude is everything. Change your attitude and you change your life by Jeff Keller. From lawyer to motivational speaker, I continued my self-study program in my spare time. While I worked full-time as a lawyer, the positive thinking was helping my attitude at work, but I felt a passion for my hobby that I never felt for my work, and I dreamed about the day I could walk away from my job. In 1999, after 4 years of intensive research about attitude and motivational concepts, I agreed to present some adult education seminars in the evenings at a local high school. I was to be paid $30 for each 2-hour class, not the kind of money that lets you quit your day job. As I stood in front of the class to start my first seminar, I was petrified. My heart was pounding and I was sweating. But somehow I managed to muster the courage to just do it. The students loved the class and I got a real adrenaline rush from presenting the material that had revolutionized my own life and that had the power to do the same for others. I was on my way. Eventually, the speaking phase grew a little larger and in 1990, I decided to phase out my law career over the next few years. This wasn't a simple decision. I had gone to 4 years of college and 3 years of law school to obtain my law degree. On top of that, I had spent 10 years of my life as a practicing lawyer. When you have that much invested in a career, it's not so easy to walk away. Then, of course, there was the money issue. As a lawyer, I was on track to earn $100,000 in a few years, and I had been earning that much and more for the rest of my professional career. So, today's quote is, never underestimate your power to change yourself. Never underestimate your power to change yourself. मिले या ना मिले, ये तो तकदीर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है. Choice is yours, तेरा, because एक ही तो जिंदगी मिली है, दिरा. एक ही तो जिंदगी मिली है, दिरा. Choice is yours. क्योंकि you know it. यथा दृष्टि तथा सृष्टि. डर के आगे ही तो जीत है. डर के आगे ही तो जीत है.